We are discussing kinematical equations, right? Three equations we have discussed already. Fourth के बारे में बात करनी है ना? And that equation is SNF is equal to U plus half A or 2n minus 1, right? This is the equation. ये जो डिस्टेंस है, this is the distance covered by the particle, in the nth second of its motion. Nth second of its motion, right? Here, a particle is moving on a straight line. There is a particle. This is moving along this straight line with a constant acceleration. That acceleration is A. U is the initial velocity. At time t is equal to 0, the particle is here, and its velocity is u. Okay. Nth second का मतलब हुआ कि n second में covered distance are divided by n minus 1 second में covered distance. ये इसका ये distance हमको निकालना है. जैसे 5th second में covered distance का मतलब हुआ कि distance covered in 5 seconds minus distance covered in 4 seconds. तो nth second में जो covered distance होगा, that should be equal to distance covered in n seconds minus distance covered in n minus 1 second. ठीक, हम लोग जानते हैं s is equal to ut plus half a t square, right? Displacement in time t, this is initial velocity. n minus 1 a n next second में जो distance covered होगा वह क्या होगा? n सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग SNF. दिस इज इक्वल टू SN minus SN minus 1. SN is the distance covered by the particle in n seconds, or n minus 1 is the distance covered by the particle in n minus 1 second, right? इसको हम लिख सकते हैं u प्लस हाफ a n स्क्वायर, राइट? t की जगह हमने लिख दिया है, और माइनस ये लिखना होगा तो u और t यहाँ लिखना है ut लिखना होगा u n ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब t की जगह n लिख दिया, un प्लस हाफ a n माइनस. यहाँ पर लिखना होगा u और t की जगह n माइनस 1 और प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर. देखिए, this is the distance covered by the particle in n minus 1 seconds, and this is the distance covered by the particle in n seconds. ये डिस्टेंस बाहर निकल जाएगा, and this is the SNF. इसको सिंप्लीफाई किया जाए, then you will get this equation. सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? ये देखो, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, राइट? और इसको लिखे हम लोग माइनस un प्लस u a माइनस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक, देखो तो ये कैंसिल हो रहा है नहीं, और फिर यहाँ लिखा जाए तो हाफ a n स्क्वायर और माइनस a प्लस u है, माइनस हाफ a और n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1.
फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, ये यू होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, हाफ ए और 2n minus 1, right? And this is the distance covered by the particle in the nth second of its motion. Is it all right? This relation can be also derived by calculus method. Calculus method इसको कैसे करेंगे जरा उसको देख लेते हैं. Method 2. Velocity v is equal to ds by dt, right? This is the definition. Right? Okay. V is equal to ds by dt. This is the definition of velocity. ds is equal to v, ये लिखेंगे और v की जगह पर क्या u प्लस at लिख सकते हैं, राइट? और ये इसको u t t लिख दिया जाए और प्लस a और t. Now let us integrate this. Let us integrate this. इंटीग्रेट करें तो ये ds u dt प्लस a और t, राइट? t का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? n-1 से n तक. तो लोअर लिमिट n-1, अपर लिमिट क्या? n. तो यहाँ ऊपर n लिख देते हैं, n नहीं, और ये n-1 और n-1, राइट? और ये s(n-1) एंड दिस इज s. तब हम इसको लिख सकते हैं sn minus sn-1. दिस इज इक्वल टू u और यहाँ ये t है, इसको इंटीग्रेट कर dt, इंटीग्रेशन dt. लोअर लिमिट रखा है n-1, अपर लिमिट n प्लस a और इसे इंटीग्रेट करेंगे t dt, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट n-1 और फिर और this is the distance covered by the particle in the nth second, and this is equal to a n u लिखेंगे और यहाँ n minus n-1, राइट? और a हाफ को बाहर कर दिया जाए, a और यहाँ n स्क्वायर माइनस n-1 का. After simplifying this, we get u plus half a or 2n-1. This is how we can derive this relation of kinematical equation by calculus method. This is integration. Now let us consider a problem. A particle starts to move. A particle starts to move along a straight line with a constant acceleration. Constant acceleration. Distance covered by the particle. Distance covered
by the particle and the nth second is best represented by the curve. Options are like this: A, B, C, and D. Yeah. बोलते ही नहीं 11 मिनट हो गया 11 मिनट का बोलोगे तब जाएंगे तो बैठे क्या S and X इस पर प्लॉट किया N को इस पर प्लॉट किया the equation is S N F is equal to U0 है half A और 2n minus 1 प्रॉब्लम में दिया हुआ है starts to move initial velocity g E ऐसे यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन लाइक दिस one option is like this and the second option is like this and third option this is A, this is B, and this is C, and this is D. देखो ये ऐसे दिया हुआ एक कर्व है A, a straight line parallel to N, and this is a straight line which starts from this point. Again this is straight line. Option should be D. D is the option. ये straight line ये नहीं है. No. Option B is correct. B is correct option. क्यों? देखो इसको यदि प्लॉट किया जाए n के साथ तो ये of course this is the equation of a straight line. Its slope is positive and intercept will be negative. The slope positive, intercept negative is straight line. लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है. This is not continuous. n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 होगा तो जो आएगा पॉइंट्स जो आएंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे. So I have shown like this. Dot 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 ऐसे है ना. The straight line has been shown by dots. This line will not be continuous. So straight line होगा and that will be given by B. B option is correct. A straight line with positive slope and intercept will be negative. You know the equation of the straight line? The straight line कैसी होगी? जिसका slope जो होगा वो क्या आएगा? A आएगा और उसका जो intercept होगा वो a by minus a by 2 आएगा. We will get a straight line which slope is positive and intercept is negative. So this B option will be correct. Now let us consider another problem. A particle starts to move. Particle starts to move along a straight line. With a constant acceleration.
acceleration, right? The distance covered by the particle, distance covered by the particle in the last second of its motion, last second of its motion is 7/16 of the total distance. Total distance. Find the velocity to leave. Acceleration of the particle is acceleration of the particle is 10 meter per second square. What will be the total distance covered by the particle during its motion, right? To solve this problem, we have to use the kinematical equation, just we have derived here. S is equal to U plus half A or 2n minus U is equal to 0. Initial velocity of the particle is 0. A particle starts to move. Constant acceleration दिया है. क्वेश्चन में जो दिया है कि n सेकंड जो डिस्टेंस कवर किया वह n सेकंड में डिस्टेंस जो कवर किया, दोनों में क्या रिलेशन है? s nf is equal to 7/16 sn. Sn minus Sn, right? nf डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का 7/16. तो Snf क्या होगा? हाफ a और 2n minus 1. If the particle is in motion for n seconds, initial velocity 0, then the distance covered by the particle in the nth second will be half a or 2n minus 1. 7/16 और ये क्या होगा? हाफ a n square, right? 7/16 half. This is the distance covered by the particle in n seconds. ये हाफ है और हाफ इसको साफ कर दिया जाए तो 16 n 2n minus 1 and this is equal to 7n square. You will get this quadratic equation like this: 7n square minus 32n or plus 16. Let us factorize this. 7n square minus 28n minus 4n plus 16 is equal to 0. 7n common ले लिया जाए, 10 minus 4 or minus 4, n minus 4. You will get like this: n minus 4, 7n minus 4, and this is equal to 0, and n will be equal to 4 or 4/7. n का वैल्यू कोई इंटीजर होगा. आई थिंक व्हाट इज द टाइम क्वेश्चन? जोर से बोलो यार. At the end of total distance covered, निकालना. n is equal to 4 is the acceptable value.
The particle remains in motion for 4 seconds. The particle remains in motion for 4 seconds, right? Total distance covered by particle Sn, this will be equal to 0 initial velocity, half an square. And the problem A is given, that is 10 और n is equal to 4 seconds, 4 का स्क्वायर कर दिया जाए and you get 80 meter. The particle travels a distance 80 meter during its motion. Is it all right? Now let us consider another problem. A particle is moving like this. Initial velocity u and acceleration of the particle is a. Acceleration of the particle is a and initial velocity is u. The particle covers 10 meters and 15 meters. And the third and the fourth, fifth second of its motion. Second of its motion. Right? We have to find the initial velocity. The initial velocity and the acceleration of the particle and the acceleration of the particle. Very simple. Direct application of the equation. S n n हमने सीखा है. This is equal to u plus half a up to n minus. पहले में क्या दिया? थर्ड में 10 मीटर. तो 10 is equal to u plus half a third. 3 रखा जाए तो 6 ये 5 हो जाएगा. और फिर फिफ्थ सेकंड में 15 है u plus half a और फिफ्थ n 5 है. 10 minus 1 9 हो जाएगा. नहीं, और इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो 15 is equal to u plus 9a by 2 और 10 is equal to u plus 5a by 2. Very simple. Let us subtract this और 5 is equal to, देखो u तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 होगा और एक्सेलरेशन a will be equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नहीं, और e का वैल्यू इसमें रखो. 10 is equal to u plus half a. a कितना है? 5/2 और यहाँ क्या है? 5 है. ठीक, तो ये u is equal to what? 10 minus 25/4 and this will be 15/4 meter per second. We got two equations and two independent equations. We solved and got the values of the initial velocity and the acceleration. Initial velocity is 15/4 meter per second, right? And acceleration of the particle will be 2.5 meter per second square. That's all for today. I think the points discussed are very clear.